morning students, myself Ashutosh Sharma, and today we study about the Hardy-Weinberg principle. This is an important topic of lesson 7 evolution. This principle was given by G.H. Hardy, an English mathematician, and W. Weinberg, a German physician, in 1908. First of all, try to understand what was discussed by them in this principle. उन्होंने क्या डिस्कस किया था? इस प्रिंसिपल के अनुसार, suppose an isolated land area is there. Isolated land area means ये बिल्कुल अलग थलग है. Suppose this is the island in the sea, और इस आइलैंड पर ये कुछ स्पीसीज, वहां पर पॉपुलेशन है, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग उनका ये कहना था कि इस लैंड पीस पर कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा यदि ये पॉपुलेशन यहां से कहीं बाहर न जा पाए. इट मीन्स ये माइग्रेट न कर पाए और कहीं बाहर से किसी दूसरे आइलैंड से स्पेन आए. इट मीन्स इमाइग्रेशन न कर पाए. इसके साथ साथ इनके अंदर कोई भी म्यूटेशन न आए, कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम चेंज न आए जीन्स के अंदर, और किसी भी तरह का इनमें नेचुरल सिलेक्शन न हो, तो यहां पर कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा. इवोल्यूशन नहीं होगा. अब इस बात को इन्होंने अपने तरीके से इन दी फॉर्म इक्विलिब्रियम, एक इक्वेशन की फॉर्म में इन्होंने बताया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू गो थ्रू द प्रिंसिपल. ये क्या प्रिंसिपल है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल, allele frequencies in a population of a habitat are stable and constant from generation to generation. That is, the gene pool. Gene pool means total genes or alleles in a population remains constant. It is called as genetic equilibrium. The sum total of all the allelic frequencies is 1. The probability that an allele A with a frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probability, that is P square. Similarly, small a is Q square of capital A small a 2pq. Hence, equation क्या है वो? P square plus 2pq plus Q square is equal to 1. It means it is a binomial expression of P plus Q का होल वर्ग, होल स्क्वायर ऑफ P plus Q. यहां पर P, कैपिटल P, द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A. Just try to understand about the allele. What is allele? Allele is the pair of genes which are located on the chromosomes. So these are the genes, and these factors which are called by Mendel, these factors or genes which are located on the chromosomes and are responsible to express the characters, these are the alleles. So allelic frequency, so P is the gene frequency of allele A, Q is the gene frequency of allele A, that is recessive. Allele capital A is the dominant, and small a is the recessive. P square, that is genotype frequencies of genotype AA. This is the homozygous dominant. Q square is equal to genotype of frequency of genotype small AA. This is the homozygous recessive. While the PQ is the genotype frequencies of genotype capital A small a. This is the heterozygous. It means if there is no change
in the allelic frequency which are present in a given population, तो कोई भी evolution नहीं होगा. Now, when frequencies measured differ from expected values, this difference indicate the evolutionary changes. Thus, we can say that the disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium or changes in the frequencies of alleles in a population would be interpreted as a resulting in the evolution. It means यदि जब तक इसमें यदि जीन्स के अंदर कोई चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी एलिट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होगा तो ही इवोल्यूशन होगा, अदरवाइज कोई इवोल्यूशन नहीं होगा. नाउ देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लॉ. Students, now go through the 5 factors that affect the Hardy-Weinberg principle. ये वो 5 फैक्टर हैं जिसके कारण यदि ये फैक्टर मौजूद रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल मान्य नहीं होगा. कौन से फैक्टर हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन माइग्रेशन. इट मीन्स इट अकर ड्यू टू द इमाइग्रेशन, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, और इमाइग्रेशन इट मीन्स दूसरी जगह से पहली जगह पर वापस आना. एंड जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन. Thus, new genes or alleles are added to the new population and lost from the old population. It means यदि एक पॉपुलेशन एक जगह से एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाते हैं, इट मीन्स इमाइग्रेशन होता है और उस दूसरे हैबिटेट के जीन्स के अंदर वहां पर उनमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण टोटल चेंजेस आते हैं, एलील चेंज होता है और एलील्स में चेंज होने के कारण वेरिएशंस आते हैं जिनके कारण इवोल्यूशन होता है. नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट मींस रैंडम चेंजेस इन द एलील और फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए पॉपुलेशन अकरिंग बाय चांस. ये रैंडम चेंज किसी भी कारण से हो सकती हैं. यूवी रेडिएशंस इज द कॉज ऑफ रैंडम चेंज. Any chemical changes or chemicals are also the cause of random change. So these changes are drastically different that form a new species. The original drifted population becomes the founder, and the changes in the genotype or phenotype of the progeny constitute the founder effect. It means जिसके कारण जिस जीन पूल के माइग्रेशन के कारण वो जेनेटिक ड्रिफ्ट या रैंडम चेंज या वो रैंडम चेंज वाले जीन्स जहां भी कहीं नई जगह गए वो वहां के फाउंडर कहलाए, और उन फाउंडर के कारण जो वहां पे पूरी पॉपुलेशन में जो चेंज आया वो चेंज कहलाया, वो इफेक्ट कहलाया फाउंडर इफेक्ट. इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फिनोमेनन इन द इवोल्यूशन. नाउ थर्ड फैक्टर इज द म्यूटेशन. These are the random change. As you know about the mutation, mutation are the sudden change or random change. And mutations, theory of mutations was given by Hugo de Vries. So these are the random and occur at very slow rates. These are sufficient to create the considerable genetic variations for speciation. Means new species formation के लिए जो variation चाहिए, we can say that prolonged mutations are the variations, and variations are the important factors for the evolution. Now fourth one is the recombination. Recombination means these recombinants are present on the genes, on the chromosomes. As you know very well that genes are the located on the chromosome. Suppose these are the variant genes, so they may be called as the recombinants, and these recombinants goes to the same kind of individual. For example, in the case of asexual reproduction, these recombinants pass to the next generation as it is. But in the case of sexual reproduction or in the case of
sexual reproduction, these recombinants changes or the change in the genes takes place, and this change is responsible for the changes in the genes and responsible for mutation and randomly or ultimately for the variations, and these variations are important phenomenon in the case of evolution. So recombination of gene occur due to the crossing over in the meiosis at the time of the gametogenesis, and these are responsible for evolution. Now fifth factor is the natural selection. It is the most critical evolutionary process that lead to changes in the allele frequencies and favors the or promotes the adaptations as a product of the evolution, and it promotes the speciation. It means the adaptation is the very important phenomenon in the case of any living beings. Whenever any living beings goes to the any new habitat, then it adapts itself according to the environment, and this adaptation takes place due to the nature. This is known as natural selection, and natural selection is the very important phenomenon in the case of the evolution. Thus, these are the 5 factors which affect the Hardy-Weinberg principle. That's all. Have a nice day. Thank you and have a nice day.